Hello everyone. In previous video we have discussed isentropic process. We have also plotted isentropic process on PV and TS diagram और हमने isentropic relationship जो property relationships है वो भी देखा था. In this video we are going to drive relationship of internal energy, change in internal energy, change in enthalpy, change in entropy and work done for an adiabatic or isentropic process. So let's get started. First of all, change in internal energy of an adiabatic or isentropic process. Delta U is equal to integral 1 to 2 du integral 1 to 2 cv dt. So cv is constant, so you can take this outside the integration sign dt. Then the integration of dt is your t only, so cv t2 minus t1. In similar way, delta h integral 1 to 2 dh 1 to 2 cp dt, specific heat at constant pressure which is as constant 1 to 2 dt. Then if you solve this, you will have cp t2 minus t1. Change in entropy, this process is also called as isentropic process, or for a reversible process, delta s is given by integral 1 to 2 del q by t, and this del q is 0 because it is an adiabatic process, so 0 by t, so it's your 0. Now the another thing is your work done for an isobaric or isentropic or adiabatic process. So for any reversible non-flow process, the work done is given as integral 1 to 2 p into dv. Now we have seen isentropic law, pv raised to gamma is equal to c. So यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे, p is equal to c by v raised to gamma. So if you put this value of p here, so you will have 1 to 2 c by v raised to gamma into dv. This is your gamma. So c is constant, आप उसको बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के. So dv by v raised to gamma. Now we have to solve this integration. So c integration 1 to 2 v raised to minus gamma into dv. It is in the form of x to power m dx. So this is your c 1 to 2, we'll solve this, v minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1 integration 1 to 2. So हम इस टर्म को बाहर ले लेंगे, you will have only c divided by this term. It can be written as 1 minus gamma, and this your v to the power 1 minus gamma integration 1 to 2. सो यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे 1 to 2 जो भी है. सो c अपॉन 1 माइनस गैमा इंटू v2 पावर 1 माइनस गैमा माइनस v1 पावर 1 माइनस गैमा. नाउ विल मल्टीप्लाई विथ c. c से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो टर्म्स है हमारे अंदर उनको. So you will have 1 upon 1 minus gamma c
V2 पावर 1 माइनस गैमा माइनस C V1 पावर 1 माइनस गैमा। ये जो C है ये हमारा इस इक्वेशन से आया है, PV रेस टू गैमा इज इक्वल टू C। सो यहाँ पर P जो कांस्टेंट है विच कैन बी रिटन एज P1 V1 और विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज P2 V2 रेस टू गैमा इज इक्वल टू C। सो हम इन दोनों टर्म्स को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जो V2 की टर्म है हम उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे और जो V1 की टर्म है हम उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। सो बोथ टर्म्स आर सेम, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ दिस टर्म आर सेम, okay, which is equal to constant. So 1 minus gamma, so P2 V2 power gamma into V2 1 minus gamma minus P1 V1 raised to power gamma into V1 1 minus gamma. So यहाँ पर जो ये टर्म्स है प्रोडक्ट है, सो इनके पावर का आप एडिशन कर सकते हैं। सो 1 माइनस गैमा P2 V2 गैमा प्लस 1 माइनस गैमा, दिस गैमा प्लस 1 माइनस गैमा माइनस P1 V1 रेस टू गैमा प्लस 1 माइनस गैमा। दिस इज प्लस गैमा, दिस इज माइनस गैमा, दिस विल कैंसल आउट, अगेन दिस वन प्लस गैमा एंड माइनस गैमा। सो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बचेंगी वो ये रहेंगी 1 अपॉन गैमा P2 V2 माइनस P1 V1। So this is our final equation of work done. अगेन हम इसको PV इज इक्वल टू RT भी ले सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे PV इज इक्वल टू RT, सो यू विल हैव RT2 and RT1, so you will have M is equal to 1 R upon 1 minus gamma, because R is दोनों में कॉमन रहेगा, T2 minus T1. This is another form of this work done. So we have discussed work done for an isentropic or adiabatic process. We have also seen delta H, change in enthalpy, change in internal energy, and change in entropy of an isentropic process.